cricket at its best. 1 minute down, next minute. Welcome to the Generation Gap podcast. I'm Temurvi, that's Tanya. And what the hell is going on? You accidentally like the video, reacting to it. चल चल दोबारा कर लेता हूँ मैं. It's fine. अच्छा. No, we can Hello keep this. everyone. Oh, we can keep it. अच्छा ठीक है चलो इसको रख लेते हैं. We can keep it. One of those like spontaneous things जो कि आपके हमेशा गलतियाँ जो आप अपने podcast के अंदर डालते हैं. But yeah. Okay, so we are here to discuss the Pakistan versus India World T20 match. But before we start, this program is brought to you by Chachu Ki Chalakiyan. And proceeding on to the discussion of the big game. As you know, Dania, we were trying to have start recording yesterday right after the game, जब जख्म थोड़े ताज़ा थे और प्रॉपर जो है इमोशन के साथ जो है वो बात की जा सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे वी couldn't be available. तो अभी आज थोड़ा सा रिलेटिवली क्या कह सकते हैं, आफ्टर स्लीपिंग ऑन द होल थिंग एंड थिंकिंग इट ओवर, थोड़ा सा हम मे बी लॉजिकल तरीके से और आसानी क्या कैसे कह सकते हैं, थोड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ जो है वो इस पॉडकास्ट में हम बात कर सकते हैं. बट या let's start with the whole thing. I think उसमें ये है कि let's talk about the big thing that's going on right now, and I want your opinion on this as well. So, fair result or not? Because I think one of the big narratives that a lot of people are pushing right now are कि यार wasn't a fair result, cheating हुई, umpires ने गलत decisions दिए, no ball जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, dead ball होनी चाहिए थी, और अनफेयरली जो है वो इंडिया को एडवांटेज दिया गया जिसकी वजह से जो है वो आखिर में जीत गए. सो आई थिंक उसमें आपका इसके बारे में व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, लाइक दिस particular narrative that's emerged in the last day or so? Okay, so before I get into whether or not the game was fair, let's assume the fact that it was unfair. Are we really saying that Kohli would not have won the match anyways? Like, जिस level की bowling नवाज करा रहा था, Kohli would have smashed him anyways. There's no like I can understand the feeling. It's like it leaves a sour taste in everyone's mouth कि like जीते भी तो कैसे जीते. But that was India's day. That was Kohli's day. We cannot, like, by all probability we can assume that India was going to smash away Nawaz अगर वो no ball भी ना कराता तो. And plus उनकी जो strategy लग रही थी वो यही थी कि full tossing कराएंगे and थोड़ा सा उनको overwhelm करेंगे. पीछे खड़ा हो गया था रिजवान. Like उस तरह की तो बॉलों पे तो you can't expect कि like विराट कोहली नहीं मारेगा. विराट कोहली को like फुटबॉल जितनी बॉल दिख रही थी, like it was very obvious it was his day. And it's kind of petty because आजकल because पूरा एक साल हो गया पिछले पाकिस्तान इंडिया के मैच पे and I'm seeing posts कि last year the greatest chase ever happened. Bhai, this was the greatest chase ever. Like this is just this is not even a competition. This was phenomenal. They made 48 runs in 3 overs. This is unprecedented stuff. लाइक ये सिर्फ एक ही दफ़ा पहले हो चुका है, 2 दफ़ा पहले हो चुका है. एक वो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल था तब हुआ था, और एक वो मोहाली में जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ था. व्हिच बाय द वे आई नीड टू पॉइंट दिस आउट बिकॉज आई एम वेरी प्राउड अबाउट दिस. मैं 12वें ओवर से मैच में कह रहा था कि कोहली कैन मेक दीज रन्स इन द फाइनल 3 ओवर. ये जो इसने पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में किया था ना, जो उसने पूरा चेस किया था 5 ओवर में बना लिए थे, ही कैन रिक्रिएट दैट मैच. एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि वही एग्जैक्ट चीज़ हुई, उतनी ही एग्जैक्ट सेम बॉलों में हुआ. So just it was Kohli's day and my point. And when we talk about the क्या कहते हैं the fairness, पहली बात तो ये जो स्टम्प्स वाली चीज़ है फुल रोनती है हमारी तरफ से, बिकॉज स्टम्प्स पे अगर आप रूल्स पढ़े तो स्टम्प्स पे रन होते हैं. एंड लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, लाइक मुझे तो ये समझ नहीं आया कि रिजवान लोगों ने क्यों नहीं पढ़ी हुई थी रूल्स. व्हाई डिड दे स्टॉप टू अपील बिफोर एक्चुअली ट्राइंग टू स्टॉप द बॉल. Like they should have known the rule के रूल यही है कि स्टम्प्स पे भाई फ्री हिट है, भाई फ्री हिट पे स्टम्प्स पे आउट थोड़ी हो जाएगा. like that's not how it works. They can make a run, right? So it's like even if you haven't read the rules, it's common assumption you shouldn't have stopped to appeal के ball dead है. It's not dead. Like that's not how it works. Like ये तो मैंने रूल्स पढ़े नहीं थे उससे पहले भी I knew कि like this must be fair game, right? But like stumps वाली चीज 100% that was fair.
and that was great presence of mind on the mind presence of mind for Kohli, because उसने फौरन बोला कि बस भागना है. I don't think उसके ध्यान में भी था कि रूल है या नहीं, उसने बस भागा. So again, good for him. जो नो बॉल वाली बात है, I that wasn't a no ball. आप जो भी कह लें, but again, but see, that's my point. Like, that wasn't a no ball, but then it went for six anyways. So like, my point is कि Kohli would have smashed even Nawaz anyways. So it's again, that was not a no ball. वो बहुत clearly trajectory उसकी टांगों पे आ रही थी, lower मतलब नीज से नीचे आ रही थी trajectory. So like, that's और not वो no. आगे खड़ा हुआ था. आगे भी He खड़ा was था. outside the. हाँ. So you could argue कि वो Yorker length पे बॉल थी, जो कि वो आगे लगा हुआ था, तो थोड़ा सा illusion आ रहा था. So again, but let's not act like we could have beaten Kohli at that particular mindset. Like, that just wouldn't have happened. खास तौर पे जिस तरह के प्रेशर नवाज में था, अंडरस्टैंडेबली सो, जिस तरह का प्रेशर नवाज में था, एंड जिस तरह, I wouldn't say Kohli was calm, but he was in his zone. So when you have a pressure में bowler, and when you have someone who is, one of the greatest players of all time and also in his zone, you can do the maths. So yeah, so that's what I think. Say, my take on this will be a bit different, not in terms of कि मैं कहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा ज्यादती पाकिस्तान के साथ हुई. I would see it in a slightly different light. I would maybe like position the question a bit differently, like in terms of कि हाँ मतलब fair था कि unfair था. In terms of, I wouldn't say umpiring decisions की वजह से probably पाकिस्तान necessarily नहीं हारा. Yes, वही बात है कि एक दो decisions आगे पीछे हो जाते तो हो सकता है कि could have squeaked through. लेकिन I think उसमें I would see it fairness and unfairness more in terms of how the teams, the kind of advantages the teams had in terms of conditions and in terms of some decisions that went their way. For me, it's more of a collective thing. Like, for example, I would say that maybe the conditions were a bit unfair to Pakistan because obviously जब पाकिस्तान की बैटिंग चल रही थी तो बॉल जो है वो कोई 8-10 ओवर तक फुट स्विंग करने में लगी हुई थी. Especially first 4-5 overs, so it was unplayable. And then it kept swinging till like the 8th or 10th over. पाकिस्तान जब आया तो आपके लिटरली बॉल वन से स्विंग नहीं कर रही थी. शाहीन आई अंडरस्टैंड वाज नॉट इन द जोन और वो फुल फिटनेस पे नहीं था, लेकिन उससे भी स्विंग बिल्कुल नहीं हो पा रही थी, किसी से स्विंग नहीं हो रही थी. आई डोंट थिंक एनीवन वाज स्विंगिंग द बॉल. शाहीन नसीम थोड़ा बहुत कर रहा था बट नॉट मच आइदर, टू बी ऑनेस्ट. तो उसमें ये था कि कंडीशंस का बहुत डिफरेंस था. आई थिंक वो एक चीज थी कि इंडिया हैड लाइक दिस ह्यूमंगस एडवांटेज कि द बॉल वाज नियरली अनप्लेएबल फॉर द फर्स्ट 4-5 ओवर्स, और सिर्फ सर्वाइव कर जाना बड़ी बात थी पाकिस्तान के लिए. और उसके बाद भी आई थिंक अ फ्यू एम्पायरिंग डिसीजंस हियर एंड देयर, यस, उस चीज पे कहा जा सकता है कि थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज पाकिस्तान को उस पर्टिकुलर चीज पे भी हुआ. एंड देन ऑफ कोर्स बैड लक फॉर पाकिस्तान दैट कोहली प्लेज प्रोबब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ. That is also a bit of bad luck कि आप you just happen to be in front of such an amazing innings from such an amazing batsman. तो उस तरह से पाकिस्तान के लिए unfairness इस सेंस में थी कि they had a lot of bad luck happening to them at the same time. A lot of things that probably wouldn't align otherwise suddenly aligned against them. तो उस सेंस में थोड़ी बहुत unfairness कह सकता हूँ पाकिस्तान के लिए because they didn't have like the most even conditions, and of course Shaheen was not at his peak either. वो भी थोड़ा बहुत उसमें कहा जा सकता है. But coming to the next point, which for me is जो मैंने पहले भी argue किया था कि this kind of reminds me a bit of the first match of the Asia Cup. कि Pakistan not playing at its peak and India barely squeaking through because of the amazing performance of one player. The amazing performance from the Asia Cup was from Hardik Pandya, who didn't do much in this match, but this time around it was from Virat Kohli playing the best innings of his life. And they barely won. And for me, that is something which is to be kept in mind. क्योंकि वही बात है कि a lot of things had to align for India, a lot of things had to go right for them. They had to depend on their greatest player or probably one of their greatest batsmen of all time playing the greatest innings of his life this late in his career and winning a match from a position that India has never won before. Like I think किसी ने कहा था कि once India is like 30 for 4 or something or 40 for 4, they've never won a match. And they managed to win that as well. तो वो तमाम चीजें they're not really going to align like this ever again for India. And despite that, they barely won. They won by one ball and they could have lost. They came really close to losing. Despite that, हो सकता है मैं कह रहा हूँ कि yes against Nawaz, against Kohli in that kind of form. Yeah, I understand your point. Absolutely do.
लेकिन मैं वही कहूंगा कि मे बी अनफेयरनेस पाकिस्तान की ये थी कि लॉट ऑफ थिंग्स वेंट अगेंस्ट देम, जो कि यूजुअली आपके नहीं जाती। मैं मजाक कर रहा था विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स के यार सारी हमारी लक जो है वो तो शान मसूद ने ले ली, उसके 4 कैच जो है वो 4 दफा वो आउट था लेकिन सारी लक उसके खाते में चली गई पाकिस्तान टीम की, और बाकी को लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि एक दफा बल्कि वो जो एज लगा था वो जाके सीधा कैमरे को लग गई बॉल, मतलब वो फिर भी आउट नहीं हुआ ऑल थिंग्स। I saw this meme कि क्या like कह वो जो मेरी 50 हो गई है वो जो रहे 50 हो गई है, मुझे यकीन नहीं आ रहा that was like the perfect meme for शान मसूद, वो वाकई हमें भी यकीन नहीं आ रहा था कि 50 हो गई है उसकी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उस सेंस में यस अ बिट ऑफ अनफेयरनेस इफ आई पोजीशन इट दैट पर्टिकुलर वे। आई डोंट थिंक चीटिंग वाले सीन जो और वो सारा मुझे लगता है कि थोड़ा अनफेयर है टू सम एक्सटेंट टू द एम्पायर्स एंड परहैप्स टू द इनिंग्स एज वेल दैट कोहली प्लेड, उसको थोड़ा डाउन प्ले किया जा रहा है। And I mean, I wouldn't want to take credit away from him because it was one of the best innings that anyone has ever played in T20 cricket for sure. So, fair credit to them in that regard. So, moving away from the question of fairness and unfairness and going to the match itself. So, let's start off with like the first innings from Pakistan. So, what the hell happened in the first like 4 or 5 overs? क्योंकि आई नो द पिच के बारे में और ग्राउंड के बारे में ये बताया गया था कि वहां पे स्कोर पावर स्कोर इज लाइक 131, राइट? बट आई डोंट थिंक द बॉल इज सपोज्ड टू स्विंग दैट मच, बिकॉज़ दिस इज रिमाइंड्स मी अ बिट ऑफ द, याद है वो एशिया कप में जो आमिर ने बॉलिंग की थी, लाइक फर्स्ट 3 or 4 ओवर्स ऑफ दैट, जब लिटरली हर बॉल पे लगता था कि वो विकेट लेगा और कोहली समहाउ सर्वाइव्ड दैट स्पेल एंड गॉट इंडिया थ्रू। तो वहां पे भी मतलब मुझे याद है कि इस तरह की बॉल स्विंग करने में लगी हुई थी एंड वाज जस्ट एवरी सिंगल डिलीवरी सीम लाइक इट वुड गेट अ विकेट, और बल्ले पे कुछ बैठ ही नहीं रहा था। तो लेकिन वहां तो ये था ना कि सिर्फ आई थिंक आमिर ही कर रहा था उस तरह से बॉलिंग और किसी हो नहीं रही थी, यहाँ पे तो हर बंदा कर रहा था, अर्शदीप भी कर रहा था। उस पे आई सॉरी, वांट टू ऐड वो उसमें इंडिया वाज बैटिंग सेकंड और हमने 86 बनाए थे। तो हाँ बिल्कुल उसमें एक चीज थी जो हमें इस पिच पे नहीं देखी कि वो दोनों इनिंग्स पे जो है ना बॉल स्विंग कर रही थी, हाँ कैरी। पिच कर रही थी बिल्कुल। हाँ, उसमें भी ये था पहले इसमें चार जो है पांच, सेकंड इनिंग्स में खत्म हो गई। हाँ इसमें ये था पहले 4-5 ओवर में वहां भी था, लेकिन वही बात है कि द बेस्ट ऑफ द कंडीशन वर इन द फर्स्ट 4 or 5 ओवर्स जहां पे इट वाज नियरली अनप्लेएबल। लेकिन इंडिया जैसे ही बैटिंग करने के लिए आया तो उस टाइम पे बॉल ने बिल्कुल मूव करना छोड़ ही दिया था। सो वो तो बिल्कुल ही सिरे से ही आपके जो है वो पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेज हो गया था। लेकिन अगेन इसमें एक तो ये जो सिचुएशन थी वाज कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड, समझ ही नहीं आ रहा था। एंड आई थिंक पाकिस्तान डिड प्रीटी वेल, रियली वेल एक्चुअली, टू नॉट लूज मोर देन 2 विकेट्स, क्योंकि जितने हर बॉल पे लग रहा था कि बंदे आउट हो जाएंगे, मुझे ये डर था कि 4-5 बंदे आपके 20 रन पे आउट हो जाएंगे। दैट्स हाउ इट लुक लाइक। तो वो तो मतलब इनके लिए एक काफी अचीवमेंट थी कि दे एक्चुअली मैनेज टू सर्वाइव दैट, क्योंकि yeah, the way they were swinging the ball and the way they were also controlling, I mean fair play to them in the regard that they were actually able to put the ball in the right areas, कि they weren't like losing control of the ball in the first 4 or 5 overs at least। अर्शदीप खास तौर पे बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, और even despite the ball swinging, 2 of his actual wickets came off bouncers, तो he was actually quite clever about it as well कि उसने मतलब उसको मिक्सअप भी बड़ा अच्छा किया था। So in that regard, I think they bowled well, but they couldn't take the amount of wickets that they could have taken. Pakistan played tactically quite well. मेरे हिसाब से उन्होंने पहले उसको अच्छे तरीके से ऑफ किया। I think sending जो चाचा की हम बात कर रहे थे up the order was also pretty inspired because I think they probably understood that he's a better player of swing bowling, क्योंकि वो काफी comfortably उनको खेल रहा था। Even while the ball was swinging around a lot, he looked fairly comfortable. उसको जिस तरह से वो खेल रहा था स्टार्ट में, he seemed fine compared to everyone else. Like Shan Masood constantly kept playing and missing, but he wasn't that uncomfortable. And as the longer he stayed, he seemed to get to exhibit more and more control. तो वो चीज मुझे इसमें एक काफी लगा कि I think they tactically made a really good decision उसको ऊपर भेजने का। And then I think overall they did a good job, बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई। फिर आके उसने अक्षय पटेल को एकदम मारना शुरू किया था। It's unfortunately got out right after that, like जब उसने एकदम बहुत लगता था कि एक्सेलरेट करने वाला है, लेकिन I think right after that they made a bit of a mistake, and I can see why, क्योंकि मतलब it made sense कि ठीक है हम शुरू में थोड़ा स्लो खेलेंगे, once we settle down तो फिर उसके बाद we start accelerating, and they started trying to hit out, get more runs, लेकिन उस टाइम पे एकदम मिडिल ओवर्स में फिर आपकी 4-5 विकेटें गिर गई फौरन, जब आई थिंक 3 विकेटें उसने निकाल दी थी, हार्दिक पांड्या ने निकाल दी थी, और नॉट सच ग्रेट डिलीवरीज, लेकिन
कोई बात है, हर बंदा हिट करने की कोशिश कर रहा था। और मसला ये है कि ज्यादातर आपके प्लेयर्स जो हैं वो क्रॉस बैट शॉट्स मारते हैं और वहां पे स्क्वायर पे इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्रीज हैं कि उनसे कुछ हो ही नहीं पा रहा था। प्लस द बॉल वाज बाउंसिंग अ लॉट। someone pointed out well, so जिनके साथ मैं देख रहा था, they said कि वो 12वें ओवर पे they started hitting and that maybe because कि they wanted to carry over Thakar's momentum, but उस टाइम पे उनको हिटिंग करने की जरूरत नहीं थी. like they could have like करना ही चाहिए था कि थोड़ा बहुत बस सिंगल डबल लेते रहे, 16वें ओवर तक ले आए और फिर मारने की कोशिश करें. फिर आसिफ भी आ जाएगा, आसिफ भी मतलब he thrives on such conditions. तो like it was a bit rash on like Pakistan's part to like 12वें ओवर पे वो हिटिंग करना शुरू हो जाए, जो कि आई थिंक ट्रेडिशनली भी नहीं की जाती. कोई और टीम 12वें ओवर पे नहीं मारने की कोशिश करती. हाँ, so that was a bit weird decision, I guess. They हाँ, got आई थिंक carried away. that they could have prevented in the sense के क्योंकि ग्राउंड इतना बड़ा था तो they could have effectively gotten 9 or 10 runs over easily by just hitting the gaps and going for twos and threes Yeah. occurring the occasional boundary. They could have easily gotten 9-10 runs with an over without taking too many risks. Given के दोनों उस टाइम पे सेटल हुए हुए थे, शान और क्या नाम है, इफ्तिखार, और आराम से वो बना सकते थे. लेकिन आई मीन द डिसीजन इज समवट अंडरस्टैंडेबल बिकॉज उन्हें लगा कि यार हम बहुत स्लो बना रहे हैं शुरू के ओवर्स में और अब हमें थोड़ा एक्सेलरेट करना चाहिए. लेकिन आफ्टर इफ्तिखार हिटिंग अक्षर पटेल फॉर ओवर 20 रन्स इन द ओवर, आई डोंट थिंक उतनी ज्यादा कुछ जल्दी थी उस टाइम पे. उससे पहले आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा स्लो खेल रहे थे, बट ही सडनली गॉट देम अप टू पार और उसके बाद वो आराम से कर सकते थे. पता नहीं क्यों उन्होंने फिर उस टैक्टिक के साथ वो आगे प्रोसीड किया. अगर वो ना करते तो दे एक्चुअली कुड हैव गॉटन मोर रन्स. लेकिन स्टिल दे डिड वेल. उसके बाद जब विकेट गिर भी गई तो द लोअर ऑर्डर एक्चुअली डिड प्रीटी डिसेंटली. वो खड़े हो गए. शाहीन प्लेड वेल. उसने आके काफी अच्छी बैटिंग की सरप्राइजिंगली. तो मतलब उस तरह से ओवरऑल आई मीन नॉट मच दे डिड रॉन्ग. इन फैक्ट दे डिड प्रीटी वेल. आई थिंक गेटिंग टू ऑलमोस्ट 160 आफ्टर दैट स्टार्ट on that kind of a pitch is actually remarkable. Pakistan they played out of their skins in terms of batting, and I think वो भी एक चीज है कि this team doesn't really, जो पुराने वर्ल्ड कप की अगर बात करें, just comparing it before, क्योंकि अगर आपकी यही सेम सिचुएशन किसी और वर्ल्ड कप में होती पाकिस्तान के तो they never would have gotten to this situation. क्योंकि बहुत सारी आपकी टीमें तो प्रेशर में फुस हो जाना था उन्होंने शुरू के ओवर्स में. बहुत शदीद प्रेशर इंडिया की बॉलिंग ने उनके ऊपर डाला था, बट दे somehow overcame that and they came back and gave a pretty good target. Especially अगर आपका par 131 है तो you actually went way above par in terms of setting a target on this pitch. So I think overall batting को तो, and I think वही बात है, given the result we know there's not much blame to go around because obviously nitpicking ही हम करेंगे अगर हम कहेंगे यार ये मसला हुआ था वो मसला हुआ था. Very minor nitpicks है वो, ये मिडिल ऑर्डर में हम कैसे जिस तरह बात कर रहे थे कि यार Pakistan just maybe made a wrong decision trying to hit out too early. But again, it was somewhat logical given for a slow start and all that. So, I mean, we can justify it, but not huge mistakes. They still ended up with a pretty good total, let's be honest. And at the end of the day, the main thing is the target that you set up. और टारगेट एक अच्छा था जो पाकिस्तान ने सेटअप कर दिया था 160 तक का. इसके पिच के ऊपर खासतौर बहुत अच्छा टारगेट था. So that again was a big thing. उसके बाद वही बात है कि coming into the second innings, तो उस पर सेकंड इनिंग शुरू होती है एंड देन दिस बुलशिट जिसका हमने जिक्र किया था कि सडनली द बॉल स्टॉप स्विंगिंग. अब उसमें देयर इज अ पॉइंट टू बी मेड इन टर्म्स ऑफ कि क्या कंडीशंस अनहेल्पफुल थी या पाकिस्तान से बॉलिंग नहीं हो पा रही थी या पाकिस्तानी बॉलर्स आर नॉट स्विंग बॉलर्स. क्योंकि कोर्स वही बात है कि अर्शदीप एंड क्या नाम है अपना जो उनका बॉलर था, सन्नी में नाम उसका निकल गया, नेशर कुमार जो है, दे आर स्विंग बॉलर्स एसेंशियली. And Naseem Shah is not really a swing bowler. Haris is not a swing bowler either. Only Shaheen is a swing bowler, and Shaheen was off his game anyway. So maybe there is a point to be made कि शायद उनके bowlers ज़्यादा suited थे conditions के लिए भी. लेकिन of course obviously Shaheen से भी swing नहीं हो रही थी. I understand he wasn't in his best form. लेकिन I saw his bowling against जो उसकी warm up matches में थी and he was swinging the ball. हाँ, अफगानिस्तान में वो swing कर रहा था ball को. And he was bowling at decent pace as well. So at least I would expect him to swing the ball in conditions, especially इतनी helpful condition में जहाँ हर किसी की ball swing कर रही थी, उसकी भी करनी चाहिए थी. So I mean, conditions suddenly take a turn for the worst, but somehow Pakistan ends up taking twice as many wickets compared to India. अगर उन्होंने 2 विकेटें निकाली थी, पाकिस्तान ने 4 विकेटें निकाली. So yeah, that's in despite unhelpful conditions, पाकिस्तान ने शुरू में विकेटें जो है वो निकाल ली. और आवाज थोड़ी कट रही है. अगर हम टॉस जीत जाते, you hear me? हाँ बोले.
Yeah. So my point was कि like if we had won the toss and we had opted to ball, uh, the result would have been completely different because I don't see India winning अगर हमारी ball swing कर रही होती इतना जितनी उनकी कर हाँ रही थी. Because वही बात है ना कि बिल्कुल हम बगैर swing के हमने 4 विकेटें ले ली. And plus I feel like कि चलो शाहीन की पेस कम थी, but I think अगर उसको इतनी बॉल अगर मूव करती हुई दिखती और इतनी बाउंस करते हुए दिखती तो he would have gotten hyped up. As a bowler I think वो एक naturally चीज आती है, कोई vibe में आ जाता हाँ है वो आप. वैसे ही अच्छा लगाना शुरू कर Yeah. देते हैं जोर Yeah, so वही बात है कि like that the result would have been very different, and it really like it's T20 cricket has become very toss dependent, hasn't it? हाँ बिल्कुल इनफैक्ट ये चीज मैं भूल ही गया था व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द लक फैक्टर टॉस भी इसमें आ जाता है बिकॉज ऑब्वियसली whoever would have won the toss would have decided to bowl first Yeah, तो पाकिस्तान ने भी वही करना था अगर वो टॉस जीता सो अगेन दैट वाज आल्सो समथिंग दैट वेंट इन इंडियाज फेवर अमंगस्ट अदर थिंग्स तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत बड़ा फर्क पड़ गया तो या आई मीन वो मैं कह रहा हूँ कि हाँ इसमें दैट वाज आल्सो अ बिग फैक्टर जब आपकी इनिंग्स शुरू हुई लेकिन चलें आई एम कमिंग टू अनदर पॉइंट नाउ एंड आई एम स्टार्टिंग टू सेंस अ सॉर्ट ऑफ पैटर्न व्हिच इज काइंड ऑफ ट्रबलिंग जो हमें इस मैच में भी नजर आया है सो कंसीडर व्हाट वी डिड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वहां भी यही हुआ yeah, हम मैच को डोमिनेट कर रहे थे मिडिल ओवर्स में जाके वी लॉस्ट द गेम वो दो लोग सेट सेट एग्जैक्ट वही पैटर्न था दो लोग सेटल होते हैं और आखिर में आके वो हिटिंग करा के मैच हमसे जीत जाते हैं सेम यही चीज श्रीलंका ने हमारे साथ की फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस वी शुड हैव वन दैट फाइनल 5 उनके बंदे हमने आउट किए थे 50 के ऊपर दे शुड नॉट हैव हैड अ चांस आफ्टर दैट एंड येट दे स्टिल मैनेज टू पुट अप अ गुड टारगेट और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया और इस मैच में फिर यही होता है सो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि अभी भी इंडिया के मैच के साथ भी एग्जैक्ट वही सेम पैटर्न हुआ कि आपके शुरू में 4 विकेटें गिरी then two batsmen settled in and then they were able to push and get the victory in the last few overs ये पैटर्न जो है वो काफ़ी दफ़ा हम देख चुके हैं एंड अगेन देयर इज़ दिस प्रॉब्लम कि पाकिस्तान के मिडिल ओवर्स में मुझे लग रहा है कि या तो उस तरह के कोई आपके बॉलर्स हैं नहीं या डेथ बॉलर्स की आपकी कमी है देयर समथिंग मिसिंग देयर दैट आई कैंट रियली पुट माय फिंगर ऑन बिकॉज मिडिल में आई डू अंडरस्टैंड कि शादाब और नवाज डू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ प्रेशर एज वेल वो उस पर डालते तो ज़रूर हैं लेकिन आई डोंट नो देयर इज समथिंग दैट्स लैकिंग जो कि एक टाइम पे मतलब फॉर एग्जांपल जो हसन अली फॉर एग्जांपल लेके आया करता था कि ही वुड कम इन एंड मिडिल ओवर्स में ही वुड जस्ट कीप पिकिंग अप विकेट्स एंड ही वुड जस्ट नेवर हैव द प्रेशर एंड आई एम नॉट रियली सीइंग दैट कि नवाज और शादाब मुझे लगता है रन तो रोक लेते हैं लेकिन उसमें विकेट टेकिंग जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रही होती अनलेस कि यू आर ऑन अ पिच दैट्स काइंड ऑफ स्पिनिंग ट्रैक या उस तरह की चीज़ है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन पिचेस में तो खास तौर मुझे लगता है कि दे वुड हैव अ प्रॉब्लम they might be able to contain at most but I don't think they'll be able to pick up too many wickets and if you're relying on like 8 overs of spin that's quite a big part of your क्या उसे कह सकते हैं bowling lineup and उसके मतलब if the conditions are against spin that's going to be a huge problem और वही हमारे साथ हुआ आखिर में नवाज जो लास्ट ओवर करा रहा था so but this is a tough decision क्योंकि इनमें से किसी को हटाया आपने तो who do you bring in and there's also a huge problem that you will face in terms of your batting as well कि इनको आपने निकाल दिया तो आपकी बैटिंग बहुत वीकन हो जाएगी बट बिसाइड्स दैट दैट्स अ सेपरेट प्रॉब्लम ऑल टुगेदर जिसको मैं पॉइंट कर रहा था वो तो यही है कि आपकी एक पर्टिकुलर वीकनेस है पाकिस्तान टीम की कि दे पिक अप अ लॉट ऑफ विकेट्स दिस take hold of the game and then they suddenly let it slip. Either bowling में मसला है या फिर again there's this problem of defensive captaincy perhaps जो लोगों ने point out किया है towards Babar. Like for example बाबर ने लगातार 6 overs जो हैं वो spinners की क्यों करवाए? Why didn't he mix it up? Like उनके 1-2 overs कराने के बाद he could have maybe brought in Naseem Shah for example. जिस टाइम पे उसे पता था कि अब उन्होंने अटैक करना है they have to go for it 12 runs per over चल रहा है it's not like they can stop hitting for 1 over अगर वो किसी फास्ट बॉलर को ले आता हो सकता है कि कोई विकेट निकल जाती इंडिया वुड बीन अंडर प्रेशर अगेन इंस्टेड के आखिर तक जो है वो सेम वही बंदा या सेम वही पेयर जो है वो तकरीबन एंड तक चलता रहा था सो वो एक मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी एक डिफेंसिव कैप्टनसी भी एक मसला हो सकती है व्हिच इज व्हाई दे कैंट रियली पुट देयर फुट डाउन and take advantage when they need to. Because this has happened so many times, it's just starting to look like a pretty serious weak point, Pakistan ka. And I'm not exactly sure how they can address it.
बट मुझे नज़र आ रहा है कि एक मसला है, आइदर पर्सनल की वजह से इशू है या फिर जो स्ट्रैटेजी है उसके बायस मसला हो रहा है. But there is something wrong there, and it's happened too many times for it to not be some sort of an inherent issue within the team structure. I don't know, आपने वो चीज if you kind of picked up on that or not. लेकिन So I think so I think जो strategy है हमारी bowling की, that is more क्या कहते हैं कि power play के लिए हम लोग या सो पावर प्ले में द आइडिया है कि हम पावर प्ले में विकेट ले लें, प्रेशर डालें, हम लोग अटैक करें फौरन, एंड देन उस प्रेशर में आके अमूमन टीम्स हैव लाइक दीज ओवर 6 से लेकर 14 तक वो रिलाई करते हैं कि हम सिंगल डबल लेके हम जो है थोड़ा सा ना अपने अपने आप को कंसोलिडेट कर लें, इनिंग्स को थोड़ा सा कम बैक कर लें. तो आई थिंक जो या फिर उसी ओवर में हिटिंग कर लें या स्पिनर्स होते हैं, तो लाइक तो आई थिंक जो आइडिया है टीम का वो ये है कि अगर हम इफ यू ब्रिंग इन समवन लाइक नवाज एंड समवन लाइक शादाब हु स्पेशलाइज इन लाइक क्या कहते हैं sort of holding runs and like being defensive, तो लाइक वो एक एडिशनल प्रेशर आ जाता है. एंड आई थिंक वो स्ट्रेटजी यही होती है कि फिर हम 16वें ओवर तक या 15वें ओवर तक bring in someone like Haris Rauf or we bring in someone like क्या कहते हैं Shaheen, not Shaheen, Shaheen's garbage and fine. garbage is too harsh, but he's not that good, but That's good, हाँ. he has And that, I think that's also part of the problem is like तो वही बात है कि you don't really have death bowlers हमारे पास उस तरह के नहीं रहे. Like early T20s में जिस तरह आपके पास I think you had like 2 or 3 really good death bowlers. अब पाकिस्तान only has one good death bowler which is Haris Rauf. और उसके साथ भी bad luck हुई कि उसको भी इस मैच में उसको भी runs पड़ गए. But of course Kohli had to play probably the two best shots of his life to do that. But otherwise वही मैं कह रहा हूँ कि he's the only proper death bowler that you have. शाहीन भी death bowler अच्छा नहीं है, ना नवाज अच्छा death bowler है, ना शादाब अच्छा death bowler है. Naseem ने अच्छी bowling की. Naseem is still someone who can. I think वो Naseem is someone जो कि death bowling बेहतर कर लेता है. तो उस तरह से basically you have limited options in that regard. कि आपके आखिरी जो 2 ओवर्स हैं उसके लिए, लेकिन उसमें फिर ये है कि मे बी आप उस तरीके से अपने ओवर्स करवाएं जिसमें फिर यू मेक श्योर कि हारिस रऊफ और नसीम शाह जो हैं वो आखिरी 19वां 20वां ओवर करवा रहे हैं, which are like crucial in these situations. कि 19th और 20th ओवर जो है वो नसीम और उसको मिल जाए and the rest you can maybe kind of cover up. लेकिन वही बात है कि अभी वो भी थोड़ा सा मुझे इशू लगता है कि डेथ बॉलिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. पाकिस्तान की उतनी अच्छी डेथ बॉलिंग है नहीं. And again, like you said, Shaheen is not as good in the death overs as he is in the first, like in the power play. उसमें काफी एक मेजर डिफरेंस आ जाता है. ऑलमोस्ट अनप्लेएबल इन द पावर प्ले, ही बिकम्स क्वाइट फैलेबल. क्योंकि वही बात है कि उसको पिछले वर्ल्ड कप में तो आई थिंक किसी को ही पड़े थे छक्के ना, शाहीन को ही पड़े थे. सो विद द मैच काइंड ऑफ टर्न. तो एग्जैक्टली वही बात है कि वो भी एक वीक पॉइंट तो है पाकिस्तान का. बट कमिंग टू द इनिंग्स उसके बाद ऑफ कोर्स व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट इज कि वंस वी गॉट इनटू दैट पोजीशन, 4 हमने आउट कर लिए. And then, of course, Kohli decides to play the innings of his life. And suddenly, there isn't much we can do, even though वही बात है कि शुरू में तो लग रहा था कि like he's wasting too much time, he's taking too many deliveries, और surprisingly हार्दिक से मैं expect कर रहा था हिटिंग करेगा, उसे तो लग ही नहीं रही थी shots. But somehow Kohli just kept hanging in there, and the longer he just stuck around, the better his innings seemed to get. क्योंकि जितना उसको वही बात है कि इनिशियली ही seemed to be doing okay, तो बहुत ज़्यादा he wasn't trying to do anything out of the ordinary, even like spinners को भी उसने बहुत ज़्यादा अटैक नहीं किया था. He seemed fairly defensive, but then I do want to add something. I think their biggest mistake was I don't know if it's a mistake because I'm pretty sure उन्होंने कोशिश तो की होगी कोहली को आउट करने की because he's Kohli, but I think their biggest mistake was कि they assumed कि कोहली प्रेशर में आया हुआ है क्योंकि उसने I think at one point he was like at 11 runs from 25 balls or something like that, so like बहुत low strike rate था. तो आई थिंक उन्होंने अज्यूम ये किया कि हम ये ऑलरेडी प्रेशर में तो हमें इतना क्लच करने की ज़रूरत नहीं है इसके साथ, राइट. बट दैट्स द प्रॉब्लम व्हेन यू हैव लाइक अ प्लेयर ऑफ दैट कैलिबर, राइट. लाइक अगर वो 25 बॉलें खेल चुका है तो इट्स नॉट अबाउट कि उसने रन कितने बनाए हैं कि लाइक उसका स्ट्राइक रेट बहुत लो है. इट्स मोर अबाउट कि वो सेट हो गया है एंड लाइक वो सेट नहीं होने देना.
ये आई थिंक जो गलती की है हमने हम्म, अज्यूम कर लिया कि प्रेशर में आ गए तो कभी ना कभी आउट हो जाएगा, राइट? बट दैट्स हम्म, नॉट समथिंग दैट वुड हैपन फॉर समवन लाइक कोहली, बिकॉज उसको फिर जब बॉल दिखनी शुरू हो जाती देखो है, बिकॉज बॉलों में दिखना शुरू हो जाती है, जब उसको बॉल दिखना शुरू हो गई है तो ही कैन लाइक एक्सेलरेट टू लाइक, आई थिंक ही एक्सेलरेटेड टू लाइक 250 स्ट्राइक रेट, लिखा हुआ तो 150 आ रहा था, बट आई थिंक उसका 250 तक तो क्या। हाँ, and it's not like that's a surprise because उसके stats मौजूद हैं कि कोहली in the last like 4 overs has a strike rate of over 200. या तो वो तो मतलब एक वेल रिकॉर्डेड चीज है. इट्स नॉट लाइक कि अगर आपने मैच खेला तो आपको पता नहीं कि कोहली स्टिक्स अराउंड फॉर दैट लॉन्ग तो आखिरी ओवर्स में ही इज गोइंग टू गो अबाउट 200 250 के आसपास हो जाएगा इजीली एनफ. या तो डोंट बी सरप्राइज बाय दैट एट ऑल, और ऐसा ही हुआ. सो उस सेंस में एक वो मैं कह रहा हूँ कि अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर आई वाज थिंकिंग कि मे बी इट्स लेस टू डू विद पर्सनल एंड मोर टू डू विद स्ट्रेटजी. अगेन जहाँ पे स्ट्रेटेजिकली हम डिफेंसिव हो गए, जहां पे हमें प्रोबेबली थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए था, उसको आउट करने की कोशिश करनी चाहिए थी, हम थोड़ा डिफेंसिव हो गए कि ठीक है उससे रन नहीं बन रहे, लेट्स जस्ट वेट अराउंड एंड यू नो वेट फॉर हिम टू प्रीटी मच मेक अ मिस्टेक एंड गेट आउट इंस्टेड या ऑफ अस ट्राइंग टू गेट हिम. तो वो अगेन वही जो एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी है हमारी, इट कम्स टू बाइट अस इन द एस. एंड आई फील लाइक वही सेम मसला विद द डिफेंसिव स्ट्रेटजी हमारा है कि जहां पे हम थोड़ा बैकफुट पे चले जाते हैं और हम वी जस्ट वेट फॉर द पीपल टू गेट आउट. हम कहते हैं ठीक है हमने रन का प्रेशर डाल दिया है, अब ये खुद ही गलती करके आउट हो जाएंगे, एंड देन दे डोंट डू दैट. हाँ, अब एंड आपने देन वी 5 गेट आउट कर दी तो खुद ही देन आउट हो जाएंगे सेंचुरी. या श्रीलंका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ अभी एग्जैक्टली वही सेम मिस्टेक हमने 3 दफा कर दी है. इट्स जस्ट क्या आप कह सकते हैं रिजल्ट ऑफ आवर सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी. मुझे लगता है इट्स मोर सो देन द पर्सनल परहैप्स. तो वहां पे फिर अगेन दे प्ले दिस अमेजिंग इनिंग्स, इट गोज डाउन टू द एब्सोल्यूट वायर. और मेरी तो बिल्कुल लिटरली हालत जो है वो खराब हुई थी जब आखिरी ओवर में उसको छक्के पड़ना शुरू हो गए. तो बीच में मैंने कहा चले रन बहुत ज्यादा है, आई थिंक दे कैन मेक इट. वही बात है कि आखिरी ओवर्स में बहुत ज्यादा रन रह गए थे. एंड उस टाइम पे जब हारिस रऊफ आ रहा था, हारिस रऊफ ने फिर आके बॉल मिस कराना शुरू कर दी उनकी. ही बोल्ड लाइक अ टिपिकल हारिस रऊफ ओवर कि आ रहा था एंड ही वाज जस्ट यू नो सिंगल मिस इस तरह से किए जा रहा था. एंड देन उसके बाद दैट पर्टिकुलर शॉट जो कोहली ने मारी, मैंने कहा अच्छा ये क्या हो गया, दिस लुक्स इम्पॉसिबल. और उसके बाद जब उसने फ्लिक मारी ना, मैंने कहा ये आउट है. फ्लिक पे तो मैंने कहा चलो ठीक है एक लग गई है. वो फिर भी मैंने कहा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड उसने मारी थी, दैट वाज अ गुड डिसीजन क्योंकि ऑब्वियसली छोटी बाउंड्री है वहां पे. लेकिन जब उसने फ्लिक की ना, मैंने कहा ये तो किसी सूरत नहीं होने वाला, ये तो आउट है क्योंकि इतनी बड़ी बाउंड्री है, फ्लिक पे छक्का तो किसी सूरत नहीं होने वाला. अगर घुमाता या पुल मारता ना, फिर मैं कहता चले हो सकता है बिकॉज ही पुटिंग अ बिट मोर पावर बिहाइंड इट, बिकॉज दिस इज जस्ट टाइमिंग. तो मैंने कहा ये तो सीधा सीधा हाथ में जाएगी. एंड देन दैट स्टिल वेंट ओवर. तो जब वो हुआ तो मैंने कहा अच्छा नहीं अब बढ़ गए क्योंकि मामला जो है वो खराब हो गया है. यहाँ पे अब सीन एक क्या चीज चीज. आई नोटिस कि his calculations were about के बाउंड्री लेंथ कितनी है were spot on. तो लाइक जब वो हम्म, नवाज की जब वो नो बॉल आई थी, ठीक है, हम्म, तो उसने मारी है, and although fielder got pretty close at like catching that, if you look at from like विराट कोहली's point of view, उसने मारा है and he didn't even care कि like बॉल गई है बाउंड्री पे या कैच हो गया, उसने फौरन अपील की है for no ball, which means कि उसके स्टेट ऑफ माइंड में था कि ये चली जाएगी. Like हाँ he has that calculation in his head कि ये clear कर हो जाएगी, even though it came very close to like the fielder catching it. So हाँ. in that, I don't know how intentional was that, but like considering the fact कि उसने चार unbelievable छक्के मारे, तो उस तरह से भी हो सकता है calculation मे बी अच्छी है. कि आई थिंक इन दैट सेंस मे बी वी आर गिविंग हिम टू मच क्रेडिट क्योंकि ऑब्वियसली ही माइट बी अपीलिंग फॉर नो बॉल बिकॉज उसका ख्याल था कि अगर कैच हो गया तो फिर एटलीस्ट नो बॉल में आउट तो नहीं होगा. तो ही माइट हैव वो जस्ट इतना स्टार्टेड बड़ा अपीलिंग रिस्क फॉर लेगा इस इट. मैच में, क्या चीज. वो इतना बड़ा रिस्क लेगा इस मैच में. क्या नो बॉल वाला. नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर इन केस उसने हिट कर दी थी और उसे पता तो नहीं था अभी जाएगी कि हो सकता है कैच भी हो जाए क्या पता. तो उस वजह से उसने नो बॉल के लिए पहले से अपील कर दिया कि मतलब इन केस आई गेट कॉट प्रॉब्ली छक्का ही होगा, नहीं हुआ तो मैं नो बॉल अगर फॉर एग्जांपल दे देते हैं तो दैट्स स्टिल गुड इनफ. But कि isn't he taking a risk when he does that? अगर वो ये सोच रहा है कि मैं नो बॉल की अपील कर दूंगा अगर कैच हो गया, तो नहीं वो given तो the बात, situation of the game, that's a वो तो huge शॉट risk. के बाद की बात है ना. मैं कह रहा हूँ हाँ, शॉट लगने के बाद उसको क्या होगा कि अच्छा ठीक है कि मे बी देयर इज अ चांस इट गेट्स कॉट, तो एटलीस्ट फिर मैं नो बॉल की तो ट्राई करूँ, हो सकता है पकड़ ले. अगर बिल्कुल क्लियर बाउंड्री थी फिर तो शायद वो करता भी ना कि यार ये तो छक्का जा रहा है, इसमें तो चांस ही कोई नहीं है. लेकिन चलें वो तो वही बात है कि ही इज जस्ट गोइंग टू गेट एज मच ऑफ एन एडवांटेज एज ही कैन गेट. एंड yeah, दैट अगेन यू नो स्पीक्स टू अ प्लेयर जो कि मेंटली ही इज लाइक इन द गेम एंड ही इज लाइक yeah, सीइंग the angles and he's trying to get as much of an advantage as he possibly can, चाहे वो एम्पायर से प्रेशर डालने की बात है या फील्ड के ऊपर प्रेशर डालने की बात है, एंड जस्ट अंडरस्टैंडिंग द एंगल्स के कहाँ से उसे निकलना है और किधर से उसे रन्स बनाने हैं.
So I mean that all of that was basically him just displaying his ability. Even within that appeal, I think आपको नजर आता है कि उसकी presence of mind कितनी थी. उस टाइम भी उस प्रेशर में भी उसका दिमाग नहीं गया. He was still so focused that he didn't forget about this particular thing. तो आई थिंक वो एक पर्टिकुलर चीज जब वहां पे उस सिचुएशन में आई, देन नवाज ओवर इस दौरान तो मैं भी बताया था कि 2 दफा तो मुझे लगा कि मैंने फोन तोड़ देना अपना. जब पहली दफा उसको छक्का पड़ा था और नो बॉल ऊपर से हो गई थी, मैं बेड पे बैठा हुआ था. आई बेसिकली थ्रू माय फोन डाउन, इट बाउंस्ड अप, आई ग्रैब्ड इट इन द एयर एंड देन उसके बाद मैं बाहर से निकल गया था. जब मुझे कहा गया कि सर रख दो यहाँ पे, तुम तोड़ दोगे, मैंने कहा नहीं मैं तोड़ूंगा, जिसको आई गो समवेयर एल्स. तो उसके बाद फिर मैं नीचे चला गया, आई वेंट एंड सैट डाउन ऑन द सोफा. जिसके बाद मैंने कहा यार ये तो मैच खत्म हो गया. एंड देन सडनली पता चला कि नहीं, एक्चुअली खत्म अभी नहीं हुआ. आई एक्चुअली मिस्ड द पार्ट वेयर ही बोल्ड हिम, और डेड बॉल वाला पार्ट था. क्या हुआ? आप ये देखें, आपने फोन फेंका, फोन बाउंस हुआ, लेकिन नवाज की बॉल बाउंस नहीं हो रही थी. बिल्कुल नहीं हुई, वो सीधी जा रही थी. I was actually able to bowl a lot better, and that too with the phone. मेरे हाथ में बॉल भी नहीं थी. तो उसके बाद फिर नीचे चला गया. नीचे जाके फिर आई वाज वेटिंग अराउंड एंड वाचिंग. एक्चुअली मिस द डिलीवरी जहाँ पे उसने उसको बॉल किया था, 3 रन बन गए थे. वो मेरे सामने नहीं हुआ था. वो तब हो गया था जब मैं नीचे जा रहा था और मेरा फोन बंद था. बस वहां पर जाके जब मैंने फोन दोबारा रीस्टार्ट किया तो उस वक्त क्या नाम है अपना, वो आया हुआ था अश्विन, बल्कि नहीं सॉरी, अभी वो खेल रहा था दूसरा, कार्तिक आया हुआ था. कार्तिक खेल रहा था. कार्तिक सडनली गेट स्टम्प्ड और एकदम फिर से उम्मीद जाग जाती है कि अच्छा वो कहीं जीत ना जाए. एंड phenomenal wicket keeping by Rizwan. हाँ, That was हाँ, amazing. that was a really good take वैसे जो उसने किया था. उससे पहले बाय द वे जो रन आउट भी हुआ था एक बंदे का, वो भी वैसे पूरा वो जो एक कैच उसने पकड़ा था उछल के, that was phenomenal timing. हाँ, that was really good as well. जो वहाँ बाउंस की थी बॉल हारिस की, जिसपे उसने कैच पकड़ा, that was really good as well. लेकिन या मतलब उसके बाद फिर उसने उसको स्टंपिंग की. जैसे ही स्टंपिंग हुई तो उसके बाद फिर से थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद दे कैन पुल इट ऑफ इवन डिस्पाइट दिस. फिर उसके बाद अश्विन आ गया. मैंने कहा शायद कुछ कर लें. एंड देन सडनली ही बॉल्स अ वाइड. जब उसने वाइड कराई ना, मैंने उसके बाद फिर उछाल के फोन नीचे मैंने कहा अब तो कोई जीत सकता है, तो वैसे ही मैच ड्रॉ हो गया, अब तो कोई चांस नहीं. तो फिर उसके बाद भी मैंने आखिर तक देख लिया. मैंने कहा शायद सुपर ओवर हो जाए, ऑल्दो सुपर ओवर मुझे कोई उम्मीद नहीं होती पाकिस्तान टीम के लिए. I don't think they can win a super over. लेकिन मैंने कहा चलें फिर भी देख लेते हैं in case. And then he just hits a shot over the fielders and wins. तो वो basically क्या कैसे कह सकते हैं, 2-3 दफा ये शदीद किस्म का रिएक्शन हुआ. And I wasn't expecting it from myself as well. कि इतना शदीद किस्म का मेरा रिएक्शन होगा. लेकिन वो बात है कि जब आप उस मैच सिचुएशन के अंदर होते हैं और जब सारा कुछ आप देख रहे होते हैं तो you don't really know कि आपका क्या रिएक्शन होगा. क्योंकि इट्स अ फैसिनेटिंग थिंग टू वॉच द पीपल. लाइक कुछ लोग बिल्कुल चुप होकर बैठ जाते हैं, कुछ लोग ओवरली एनिमेट हो जाते हैं, कुछ लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं. लाइक एवरी फैन हैज अ वेरी डिस्टिंक्ट एंड वेरी डिफरेंट रिएक्शन व्हाइल लाइक अ टेंस मैच इज गोइंग ऑन. तो जो थी कि जो दहशत होती है ऑफ लाइक पाकिस्तानी प्लेयर्स, नॉट पाकिस्तानी प्लेयर्स टू बी फेयर, इंडियन प्लेयर्स एज वेल, कि लाइक जावेद मियांदाद ने छक्का मारा 96 में, पीपल वर स्कैर्ड कि लाइक इवन दो ही वाज वे पास्ट हिज प्राइम, पीपल वर स्कैर्ड कि कुछ कर लेगा. Right, and that same exact thing you saw happening with Shaheen. Okay, he was clearly not fit, but जो एक I think 75% Indian crowd था, but like वो एक fear था उस crowd का कि बिल्कुल silent हो गई थी. They were just watching Shaheen कि अभी wicket आएगा, अभी wicket आएगी. That element was definitely there. Exactly, and even the Indian batsmen were doing the same thing. Like they were constantly praying for the swing that wasn't there. मुसलसल वो जो the one that comes back in, they were expecting it to come back in, और वो मुसलसल बाहर बस एक एंगल पे बाहर चली जा रही है और कुछ भी बॉल कर नहीं रही. तो वो मतलब क्या उसे कह सकते हैं कि like they were basically giving him too much respect, and they were in a way playing to his reputation more so than they were playing his bowling. लेकिन yeah, it happens. Like in the same way it's पाकिस्तान का एक mental block है against Kohli, so I think India का एक mental block है against Shaheen as well, which is well earned in some ways. Kohli more so than Shaheen, to be honest. वो तो कब से लगा हुआ, डेकेड से वो परफॉर्म करने में लगा हुआ पाकिस्तान के खिलाफ. सो आई थिंक इन दैट सेंस ही डेफिनेटली डिजर्व्स इट. लेकिन या आई मीन मैच के फौरन बाद देयर वाज सम, चले ये सारा कुछ हो गया, डिसीजन जिस तरह से भी था, दैट हैपेंड. इंडिया मैनेज्ड टू विन द गेम.
But उसके बाद भी I remember there was this video that came out with क्या उसका नाम है बाबर की वो जो मैच के दौरान मैच के बाद थी जो उन्होंने sort of क्या उसके कहते हैं तकरीर वो they always do that हाँ तो क्या सर that was great. That's all I'm trying to say. That was just amazing. हाँ बिल्कुल क्योंकि I think that's always a difficult thing कि जब आपकी उस सिचुएशन में आपने क्या बोलना है या क्या कहना है अगेन जो उसका था पहले की तरह इज लाइक सपोर्टिव ऑफ दिस टीम एंड अगेन वो जो उसकी पहले भी उसने बात की इससे यार टीम की तरह हम खेलते हैं before we go into that, did you see that वो जो मीम शेयर हुई है कि इस टीम में कोई भी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा नवाज तुम मैच विनर हो तुमने फिगर नहीं करनी लाइक द मोमेंट ही सेड्स कि फिंगर नहीं उठानी तो फिर जब पॉइंटिंग नहीं होगी लेकिन उसको फौरन बाद ही एक्चुअली पॉइंट्स नवाज हाँ एग्जैक्टली तुम मैच विनर हो लेकिन हाँ बहरहाल वही बात है कि इट्स जस्ट आई मीन इट्स अ गुड थिंग फॉर हिम टू एक्चुअली कम आउट एंड क्योंकि वही बात है कि अगर फैंस की इस तरह की हालत है तो आई थिंक प्लेयर्स की डबली सो भी एक्चुअली फॉरगेट कि उनके लिए कितना चैलेंजिंग होता है कितना मुश्किल होता है साइकोलॉजिकली उनके कितना डिफिकल्ट होगा एंड कमिंग टू दैट साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ इट डू यू थिंक दिस विल बी वन ऑफ दोज मैचेस लाइक कई इंडियन फैंस जो हैं या कई इंडियन कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि यार दिस इज लाइक द मियांदाद 6 वाली इनिंग्स कि जिसमें 20 साल लगे थे इंडिया को उसे मेंटली रिकवर करने में और पाकिस्तान को भी 2 डेकेड्स लग जाएंगे इससे रिकवर करने में do you see this match becoming that kind of a psychological block for Pakistan or do you think it's just one of those games कि जहाँ पे India just managed to squeak through Pakistan will actually win it quite easily next time because things aren't going to go really go that favorably in their direction. Yeah, so wait, do people actually believe कि like मियांदाद की 6 की वजह से इंडियन Some टीम people डिक्लाइन think that. कई लोगों को ये था कि कई इंडियन थे जो के लगे हुए थे इस तरह के यार कि नहीं इसका साइकोलॉजिकल प्रेशर है पाकिस्तान को बहुत टाइम लगेगा दिस विल बी दिस इज I get that. But what I'm asking is कि people believe कि जावेद मियांदाद के 6 के बाद the Indian team declined because that's not why the Indian team declined. नहीं वो डेट डिक्लाइंड अदरवाइज उसका ये था कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उसका था एंड दैट वाज अ फैक्ट कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जावेद मियांदाद को तो था उनके ऊपर जिस तरह से आई टोल्ड यू अबाउट द 96 का क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट इंडिया जहां पे जब तक जावेद मियांदाद खड़ा हुआ था तब तक इंडियन क्राउड के बिल्कुल सांस अटके हुए थे even after so many years and even despite the fact कि जावेद मियांदाद से लिटरली भला नहीं पकड़ा जा रहा था वो 2 साल की रिटायरमेंट के बाद आया तो उसे बॉल टाइम ही नहीं हो रहा था he was just an absolute shadow of himself और उसके बावजूद भी इंडियन क्राउड डरा हुआ था जब तक जावेद मियांदाद पिच पे था और जब वो रन आउट हुआ तब उन्होंने प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करना शुरू किया तो yes there was a huge psychological toll that six took on the Indian team and yes of course obviously they didn't have the players to overcome that psychological toll as well for the longest time and Pakistan just had a superior team let's be honest all of these are simplifications obviously if you have good players तो वो उसको इस तरह की चीजों को overcome कर लेते हैं इस तरह के mental blocks को लेकिन वही बात है कभी कह रहे हैं कि there might be like a mental block जो कि पाकिस्तानी टीम के ऊपर आ जाए I don't see that मुझे नहीं लगता I feel like this particular match for me is the same as the Asia Cup वाला match and it's overall heartening for me because मुझे लगता है कि इंडिया को इतने एडवांटेजेस मिलने के बावजूद भी वो मर मर के जीत रहे हैं और दोबारा उनको इतना एडवांटेज नहीं मिलने वाला which means Pakistan will probably win if we play them again. I don't see so many things going right for India अगले मैच में and Pakistan hasn't really played to its strength as yet. हम अभी फुल स्ट्रेंथ पे भी नहीं आए और अभी हमने अपनी मैक्सिमम जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दी है and I feel like if we play them again and which will probably be in a knockout game we will probably win. Like बहुत लोग मुझे overly optimistic कह रहे थे a lot of people were calling me overly optimistic for that particular prediction but I feel like मैंने पहले भी ये prediction की थी एशिया कप में and I feel like it will probably come true again अगर पाकिस्तान manages to get to the knockout stage which is a big if at this point क्योंकि South Africa के खिलाफ match is probably like a knockout for us. Yeah. So I think मेरे ख्याल में जो like अगर आप जावेद मियांदाद का केस देखें तो उसमें you have a case of like a very poor aside from like Kapil Dev you have a very poor Indian bowling lineup जो फिर अगर एक
छक्का मार दिया तो it's very easy for them to get like demotivated. But in this case, however, obviously players पे pressure आएगा, but these are these are generational talents. These are people who know that they're the shits. ये जो हमारे bowlers हैं, नसीम है, क्या कहते हैं, शाहीन है, and हारिस रऊफ है, they know कि they are the best in the world. People call them the best in the world. उनको अपनी performances से दिखता है. So for people like them, it's more about कि okay, Virat got this match, but like next match में they'll try even harder to get him out. And ये बात जब आप when you look at their interviews, you see that constant drive कि विराट को आउट करना है, विराट को आउट करना है. Even before, like even back when जब विराट कोहली की फॉर्म थोड़ी सी गिरी हुई थी, there was like Shaheen constantly बोलता था कि विराट कोहली is my dream wicket. So these players have that drive. ये बहुत ही like cheetah bowling lineup है. They know they're the shit, and if they come across a challenge, they're gonna be like बस ये clear करना है challenge, right? So it's Virat Kohli की wicket is a challenge. In the next match, they'll come at him even harder. So like वो that is a thing that we have in our team. Yes, you could argue कि हम by and large बहुत defensively खेलते हैं, but defensive captaincy है, but bowling defensive नहीं है. And there's two things I wanted to add regarding that. This goes off in a tangent थोड़ा सा. पहली बात तो ये, this is one of the most interesting T20 pitches across the board that I've seen. Because because this is the first time T20 World Cup ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है. ऑस्ट्रेलिया में T20s खेलने नहीं जाते. बिग बैश कोई देखता नहीं है, let's face it. but like my point is कि this is one of the most interesting T20 pitches जो मैंने देखी हैं, because these are hardcore bowling pitches, and T20 अभी तक उस तरह की pitches में खेला नहीं गया. कभी ना कभी आप देखोगे कि एशिया कप में एक पिच आ गई जो बहुत ही गंदी है, फिर पाकिस्तान 86 पे आउट हो गया और इंडिया भी ऑलमोस्ट आउट हो गया. But you don't see that as a standard. With these Australian pitches, these are bowling pitches, and it would be interesting to see how T20 format कैसे adjust करता है, because T20 format is a batting format, but like इस तरह की situation में, इस तरह की conditions में वो कैसा दिखता है, कैसा viewing experience आता है, that would be interesting to watch. उसका थोड़ा सा मैं थोड़ी झलक दिख गई थी उसकी in the Indian bowling, तो वो एक चीज़ है. And the second thing I want to talk about was, you mentioned like defensive captaincy. One thing I noticed is कि वो धोबी के कुत्ते की मिसाल आ जाती है कि like I'm not calling him a कुत्ता, but like I'm saying कि like एक धोबी के कुत्ते की मिसाल आ जाती है कि ना घर का ना घाट का. Because I remember एशिया कप में जब वो I think श्रीलंका का मैच आ रहे थे, इंडिया का मैच आ रहे थे, तो वसीम अकरम ने कहा था, because उस मैच में जो है बाबर ने गलती की थी कि उसने नवाज के ओवर निकाले इवन दो नवाज पिट रहा था. फिर उसका प्लान था कि वो हारिस को फिर एंड में लाएगा, तो उसने जहन में कैलकुलेशन की हुई थी, राइट. तो उस वक्त वसीम का बयान आया कि ही नीड्स टू लर्न कि जब आप विकेट्स आपकी 5 डाउन है तो आप अपने मेन बॉलर्स को लाओ ताकि आप विकेट्स लो, एंड देन जो है आप क्या कहते हैं मैच जीतने की कोशिश करो देन एंड देयर, राइट. सो दैट वाज इन माय ओपिनियन डिसेंट एडवाइस कंसीडरिंग कि जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच था हम इसलिए हारे थे एसेंशियली. बट इस मैच में उसने एग्जैक्टली यही चीज़ की, and people are still not happy. And I can understand people are not happy because we lost the match. But what I want to know is कि वो करे क्या? Because when he is saving up his bowlers, when he's saving up Haris Rauf for the last over, तब भी लोग complain करते हैं कि आपने नवाज को extra over क्यों दिया, ठीक है. And when he puts in like सारे bowlers एक साथ दे दिए कि बस हाँ अब attack करना है, अब मैं हारिस रऊफ को जल्दी ले आऊँगा, मैं शाहीन को जल्दी ले आऊँगा, and मुझे मैच खत्म करना है, राइट. तो जब वो ये किया जैसे उसने इस मैच में किया ये कि मैच जल्दी खत्म करने की कोशिश की, नवाज को आखिरी ओवर दे दिया, तो पीपल आर स्टिल क्रिटिसाइजिंग हिम. सो माय पॉइंट इज कि वो करे क्या. मे बी आई थिंक मेरे ख्याल में तो सोल्यूशन यही है कि वी आर अ बॉलर शॉट और हमें आसिफ को निकालने की ज़रूरत है. जो उसने शॉट खेला है दैट वाज एन इनक्रेडिबली बैड शॉट, एंड ये जो 150 छक्के मारता है, अगर ये यहाँ पे छक्के नहीं मार पा रहा एंड यहाँ इस तरह की इसकी हालत है, and we need to replace him with another bowler. We need a fourth bowler. And Asif की जगह नहीं बन रही टीम में. We इसी वजह से कोई लोग कहते हैं इफ्तिखार को बॉलिंग देते थे, who's actually done well. So I mean उस तरह से ये नहीं है कि it would have been like extremely experimental. He's actually performed really well for Pakistan of late. तो उसको भी एक extra additional bowler के तौर पे आप यूज कर सकते हैं. And I mean that was the advantage of having someone like क्या से कह सकते हैं
Shoaib and Hafiz is in the team as well, because you ended up with 6 or 7 bowling options. तो आपके पास 6 और 7 बॉलिंग ऑप्शंस थे एडिशनल, आप किसी बंदों के ला सकते थे, अगर किसी को पुट पड़ रही है तो आप इमरजेंसी में उनको बॉलिंग दे सकते थे. तो अभी मसला वो नवाज को, बिकॉज द रियल प्रॉब्लम अगेन जो आपने 2 बार मेंशन किया है कि नवाज को पुट पड़ रही थी, तो वे जस्ट ट्राइंग टू कवर अप फॉर नवाज समहाउ, बिकॉज मसला वो ये, चाहे नवाज ना भी हो, शायद आपको पड़ रही हो पुट, लेकिन किसी को भी पड़ रही है तो यू डोंट रियली हैव एनीवन एल्स टू टर्न टू. मसला वही आ रहा है ना कि आप किसको बॉल देंगे. वी नीड, आई थिंक दैट्स प्रोबब्ली द मोस्ट valid thing that we can do. I think that's a good idea, and I wholeheartedly agree with it कि इस टाइम पे आसिफ को निकालें और maybe bring in जमाल और something. क्या उसका नाम था, अमर जमाल, what's the guy's name, I'm forgetting it. तो उसको क्या सीन हुआ, लाइक उसको लाए, उसने अच्छा खेला, फिर वो बाहर हो गया. ये टिपिकल कराची सिलेक्शन की, लाइक सब बेचारे के साथ क्या हुआ, और आपने पता नहीं क्यों रखी जा रहे हैं. उस बंदे से लिटरली नहीं खेला जा रहा. मैं जो आया भी था, मैं मजाक में कहता यार इसको ही जस्ट नीड, इसको 2 बॉल कैमियो दो, उसके ऊपर वो नहीं चलने वाला, और लिटरली तीसरी बॉल पे आउट हो गया. if you remember the match, he got out in the third ball. अच्छा उसने तो exactly वही हुआ जो हम उसे कह रहे थे. he got out in the same way you said कि उसको जब शॉर्ट बॉल आती है तो बड़ा awkward सा वो फ्लिक करता है पीछे की तरफ, शॉर्ट बॉल आती, पुल मारेगा या पुल नहीं लगेगी उससे. और इस दफा वो हुआ कि एक्चुअली वाज डिफरेंट. आई एक्सपेक्टेड कि शायद इसको कर भी लेगा, क्योंकि नॉर्मली, बल्कि शायद मुझे लगता है उसे आदत पड़ गई है, वरना उसको आगे ना लोग स्लोअर बाउंसर मारते थे, क्योंकि आई रिमेंबर शुरू में ये पुल शॉट फास्ट बॉल को मार लिया करता था. लाइक वो जो मैंने बताया था ना कि एक्चुअली ही बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ द सिक्सेस ही हिट टू हसन अली, वो सारी पुल शॉट्स थी. लेकिन अभी रिसेंटली एवरीवन जस्ट बीन हिटिंग यू विद स्लोअर बाउंसर्स. हर कोई इसको स्लोअर बाउंसर मार रहा था. इस दफा उसने उसको स्लोअर पे एक्चुअल तेज बाउंसर मार दिया, एंड ही जस्ट वाजंट प्रिपेयर्ड फॉर इट एट ऑल. यार मुझे कोई तेज बाउंसर भी मार सकता है क्योंकि हर दफा आके इसको स्लोअर बाउंसर मार रहे होते हैं. नो वन जस्ट बॉल्स फुल डिलीवरीज टू हिम एनीमोर. They just come in and they bowl short, slower bouncers to him. That's about it. तो वो बात है कि उस वजह से बिल्कुल वो तैयार ही नहीं था. And you could see like एक तो चलो पिच भी तेज थी, and yes it was bouncing a lot more than expected. 2-3 बंदे इस तरह से आउट हुए थे. हारिस ने भी ऐसे ही आउट किया था, और हार्दिक ने भी ऐसी विकेटें ली थी. Deliveries that were rising a lot more than they expected. लेकिन वही बात है कि I think that's the most valid thing they can do right now is to basically get rid of Asif and bring in an additional bowling option. Even Fahim Ashraf would be a good option, to be honest. उसको ले आए, आपका आमिर को ले आए, और भी मतलब I'm sure you have other क्या था वो सैन तलत, कौन सा तलत है? वसीम जूनियर बहुत ग्रूम हो गया है. हाँ, वसीम जूनियर is an actual, हाँ, that's actually a good option as well. Wasiim Junior can actually bat. Yeah, he can bat Wasiim as well. Junior can actually bat. हाँ, I think that's probably the most valid thing they can do. Wasiim Junior को ले आए. I think that's it, especially in pitches पे जहाँ पे you need more fast bowlers than spinners. Spinners as an option रख लें, because इस time पे तो spinners जो हैं they're actually making the bulk of your middle order. तो वो भी एक चीज़ है, उनको निकाल नहीं सकते हम. लेकिन आप चले आसिफ को निकाल लें. I think that's a decent option कि वसीम जूनियर को ले आए. I think that he's probably the best option right now because he's in good form, और इन pitches पे जहाँ पे बॉल swing कर रही है he's actually going to be a really lethal bowler. और वो फॉर्म भी उसकी अच्छी चल रही है. न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था. So I think उसको लाना makes a lot of sense. Yeah, with someone like Amir Jamal, and I think उसकी बड़ी I think वो तो लेकर ही नहीं गया उसको ऑस्ट्रेलिया साथ, but like with someone like Amir Jamal, आपको फायदा ये होता है कि he's a batting all-rounder. So most days you can keep him as a batsman, but अगर आपको एक ऐसी, if you find yourself in a spot where आपको नवाज को आखिरी ओवर देना है, तो आप आमिर जमाल को दे दें. He's a good death bowler. So he has that thing कि आप most matches में उनको खिलाई ना, bowling कराई ना, but like आपको जब जरूरत पड़े आप उसको दे दें, ओवर कर देगा. Exactly. So like, yeah. बिल्कुल. I think हाँ, in that sense he probably makes more sense. लेकिन अगर वो नहीं है टीम में, I don't know squad का हिस्सा वो है कि नहीं है. लेकिन if he is part of the squad, then फिर I think the next best option is Wasim Junior. Because I think he makes a lot more sense in these situations and in this condition. आसिफ को तो निकाले हैं, seriously. Yeah. उसकी जगह हैदर है ना? तनवीर अहमद हमारे गुरुजी ने बता दिया है इस बंदे की टीम में जगह नहीं बनती, तो टीम में जगह नहीं, अब उसको निकालना पड़ेगा. तो yeah, so on that note, let's end the podcast. I do have like some last words. बताएं. ये great cricketer पे ना joke set हुआ था, like I found it very funny. Do check it out yourself. But like he talked about like we talk about Mr. 360s,
like 360 क्रिकेट। आप देखें विराट का प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या था, उसको यॉर्कर लेंथ आई, उसने बोला मैं बल्ले से नहीं मार सकता, फील्डर आगे खड़े हैं, उसने बोला मैं स्टंप से मारूंगा, पीछे जाएगी। एंड लाइक वो क्या कहते हैं, लाइक जस्ट इट वाज द बेस्ट शॉट ऑफ द आफ्टरनून, लाइक आउट ऑफ ऑल, कि लाइक स्टंप से उसने मारा। So like do check it हाँ out, it's very funny, like it's हाँ बिल्कुल yeah. बिल्कुल अच्छे खेला। Also by the way, it's just it's very nice to feel कि you, दो मैं गोरे पॉडकास्ट देखता हूँ, एक तो लाइक एक गोल्डन डक्स है और एक वो ग्रेट क्रिकेटर है, एंड इट्स वेरी नाइस टू सी कि बोथ ऑफ देम आर लाइक वाओ, एंड ये दोनों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही वो जो एशेज एशेज करते रहते हैं, like it's very nice to see कि like they're conceding the fact that this is the biggest rivalry in cricket, and like नहीं, and I pointed this out in the group, this is genuinely the greatest rivalry in cricket now. पहले तो एक political rivalry थी ना कि हम लोग we have nukes and we want to nuke each other, and now we're playing cricket, but now it's two good teams, two very good teams, two very even teams, just playing very good cricket, and I think there's nothing more excellent than that. एग्जैक्टली हाँ, आई थिंक दैट्स ट्रू, क्योंकि बड़े अरसे बाद वही बात है, क्योंकि इन द 80s you know in 90s Pakistan was a far better team और India was just kind of trying to keep up, और उसके बाद फिर 2000s में India was just a far better team and Pakistan was just barely keeping up. Of Yeah, course you would have results on both sides, लेकिन वही बात है कि बड़े सालों के बाद almost like 40 years के बाद you have two teams that are equally good or there's nothing much to separate them at this point. yeah, तो उसकी वजह से and even like and even the matches being close is quite a recent phenomena, क्योंकि वही बात है कि पहले भी जो मैचेस हुए थे उसमें भी पाकिस्तान या इंडिया बड़े मतलब एक वन साइडेड मैचेस जीते, क्योंकि फॉर एग्जांपल चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच था बिल्कुल वन साइड इंडिया की साइड पे था, फाइनल था वन साइडेड पाकिस्तान का मैच था, उसके बाद वर्ल्ड कप में भी अगेन वन साइडेड इंडिया की तरफ मैच गया था, वाजंट रियली अ क्लोज गेम आई थिंक against Pakistan, and then I think the next game जो हमने वर्ल्ड कप 2019 में खेली वो पाकिस्तान 10 विकेट से जीत गया, so again one sided. वो I think since then the matches have been very close. उसके बाद से जितने भी हुए हैं एशिया कप के मैचेस जो आपके हुए हैं and then this match as well, I think last 3 or 4 games the teams have actually been really evenly matched. वरना उससे पहले भी टीम तो वही थी, लेकिन अब probably they figured each other's tactics out a lot more, and जिस वजह से ये है कि वो एक दूसरे के खिलाफ they've started neutralizing each other a lot more. They figured things out कि हमें दूसरे को कैसे खेलना है. तो उस वजह से अब मैचेस बहुत करीब हो रहे हैं, and you know of course effort तो पहले भी बहुत था, but now I think after a long time, like probably in the last maybe 2 years or so, पिछले 2-1 सालों में तो अब every single match is just an absolute banger, और बहुत बहुत मतलब हर मैच के अंदर फुल दोनों टीमें जोर लगा रही होती हैं, लिटरली आखिरी आखिरी बॉल तक मतलब दोनों टीम लड़ने में लगी होती हैं. तो लेट्स सी हाउ लॉन्ग दिस लास्ट, तब तक चलता एक रहता है. बात I know we want to end it, but like I keep finding stuff, but like एक बात about the spirit of the game, because आजकल वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों की साइड से आते हैं, they're like some वो कुछ मर्द हजराते हैं जिनको जंगें बड़ी पसंद है, एंड they're like कि वो तस्वीर लगा देते हैं अफरीदी की और गौतम गंभीर की, और वो बोलते हैं कि we need this इंडिया Just पाकिस्तान rivalry, and like बात ये कि if you look at those actual matches जिसमें गालम गलोच हो रही होती है, एंड लाइक वो they're not really playing cricket, ज़्यादा गुस्सा है वो होता है उनको, they're हाँ not really level headed, एंड लाइक वो बड़े वन साइडेड अफेयर होते हैं. हम लोग बहुत बोलते हैं कि बड़ी दोस्तियां हो गई हैं और ये बड़ा अफेक्ट कर रहा है गेम को, बट लाइक एवर सिंस ये दोस्तियां हुई हैं गेम्स आर मोर competitive, like that has not hurt the competitiveness of the game at all, in could argue it has increased it. So like matlab, it's a good thing that they're friends and all, and like in a way, and plus like I think but if we have like India and Pakistani players fighting on the field, एक बड़ी depressing reality reflect होना शुरू हो जाती है कि oh, the two countries who want to nuke each other, like वो चीज थोड़ी हट जाए. So क्या जी? That's a cricket meme. I think so. Looks like it. हाँ बिल्कुल, this is a cricket meme. अच्छा ठीक है, sorry. yeah. So with two countries that want to nuke each other, and I don't think people want to see that. I think people want to see India Pakistan matches to be uh, a way of like political cohesion, and that I mean, happens with I think depend yeah, करता है, कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए it's proxy war. It depends on the type of fan. I think दोनों आपको मिलेंगे. आपको क्या कह सकते हैं, कोक स्टूडियो
कमेंट सेक्शन क्राउड भी मिलेगा और आपको हाँ, और आपको जो है वो लेट्स न्यूक ईच अदर वाला क्राउड भी मिलेगा. तो इट डिपेंड्स. वो अब मैंने बताया था ना, फैंस की रिएक्शन भी डिफरेंट होते हैं, तो फैंस में भी उतनी वैरायटी पाई जाती है जितनी क्रिकेटर्स में वैरायटी पाई जाती है. सो यू विल फाइंड बोथ ऑफ देम. सो चलें, ठीक है. आई थिंक लेट्स कंक्लूड बिकॉज आई नीड टू maybe edit this as well at some point. So ठीक है, चलें. Okay, see you soon, and I'll see you guys soon as well. Okay, bye.